हेलो जनाब, आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक ये है कि जो मेरा पाकिस्तान में पोर्टफोलियो है वो कैसा है और जैसा है वो ऐसा क्यों है। सो बेसिकली मैं फॉरेक्स के अलावा स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ एंड मल्टीपल कंट्रीज में करता हूँ। इस वीडियो में मैं उन शेयर्स पे बात करूँगा जो मेरे पाकिस्तान में है और अभी मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। सो पाकिस्तान में ट्रेड करते हुए तकरीबन मुझे आई वुड से 9-10 ईयर्स तो हो गए। कोर्स ओवर द ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है। सो जनरली स्पीकिंग मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। सो आई टेंड टू स्टिक विद वन शेयर अलॉट। सो पास्ट में काफ़ी प्रॉफिट्स भी मिले, काफ़ी लॉसेस भी मिले। लॉसेस इन द सेंस के आप विदाउट रिसर्च जब किसी चीज़ में घुस जाते हैं, यू नो समटाइम्स आप पेनी स्टॉक को देख के घुस जाते हैं, बट यू नीड टू डू सम रिसर्च इन दैट। एनीवे, टू बिगिन विद, एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले कि मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ। सो आपको अगर वो देखनी है तो जस्ट हैव अ लुक, उसको मैं लिंक करूँगा कहीं पे। उसी रिलेशन में उसी वीडियो में मैंने बोला था कि आई विल प्रॉब्ली गेट इनटू सम डिटेल्स के जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मैं किन शेयर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। प्राइमरीली सिंस आई एम अ फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में, आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, सो द फैक्ट के करेंसी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लाइक $1 equals almost 167 rupees if I'm not wrong. So this gives me very good room to enter into छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स जिसमें काफ़ी रूम है ग्रो करने का। स्टक भी हो सकते हैं बट जनरली आई सी के काफ़ी स्कोप है पाकिस्तानी मार्केट में। लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड अपने शेयर्स की बात करूँगा। सो मेरा पोर्टफोलियो बहुत सिंपल है। आप उसको स्प्लिट कर लें 2 पॉइंट्स में। एक तो आप पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकते बट स्टिल इट्स अ लो वैल्यू स्टॉक अराउंड 10 rupees which is my majority होल्डिंग जिसमें है। एंड सेकेंडली डिविडेंड शेयर्स। जनरली मेरी एडवाइस यही है कि आप इन दोनों टाइप्स के शेयर्स में अपनी पोर्टफोलियो बनाए करें। लेट्स से यू कुड हैव 30% डिविडेंड स्टॉक, 70% आपके पास डिफरेंट सेक्टर के छोटे मोटे स्टॉक्स होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टैंस क्या। जो ज्यादा डिफेंसिव लोग हैं या जो लॉन्ग रन का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, दे फोकस ऑन डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड्स क्या है कि आप अपने शेयर्स खरीदे एंड देन एवरी ईयर यू वुड गेट अ प्रॉफिट कट फ्रॉम द कंपनी एंड लोग उसी पे देयर सम पीपल आर ओके विद दिस, लाइक बिग टाइम इन्वेस्टर्स आर फाइन विद दैट, और एटलीस्ट हैविंग some stocks that pay dividend। अब पाकिस्तान में जो बड़े शेयर्स हैं, लाइक जो बड़ी कंपनीज हैं, PSO है, मारी पेट्रोलियम, whatever, like big shares, आप like 100 rupees and above or whatever, they all pay dividends, actually even below। So आप ये do your own research कि कौन से shares की dividend yield या जो percentage है वो क्या है, and accordingly you can decide। जो मेरा dividend stock है वो Engro है, Engro fertilizer। So I started getting into it very recently। Unfortunately, like I used to buy and sell it earlier। So आपको मैं एक screenshot show करूँगा which basically shows कि मेरे पास क्या shares हैं। It basically shows you my holding, and majority holding in yellow is PIBTL, and then Engro fertilizer is in red, and Pakistan PEL or PAEL जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन है, that's also a little bit। So anyway, जो दो मेन शेयर्स हैं जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, एक तो डिविडेंड स्टॉक्स हो गए, ठीक है, उस पर आप सोचें, like it's up to you as an investor के do you just want to, जैसे बैंक में होता है ना, you could deposit your money in the bank and the bank pays you an interest on your savings, same thing। So check out the dividend yield, see के company what's their prospective growth or whatever the case might be, and then आप उस तरह अपना portfolio build करें। So मैं अभी Engro fertilizer में हूँ and I will hopefully keep growing। As I showed you, it's around 9%। I would like to have this around 15 to 20% in future। अच्छा, second है, क्योंकि मेरा stance generally थोड़ा aggressive होता है, so I'm in a stock called PIBTL, Pakistan International Bulk Terminal। अच्छा, इसमें मेरी almost 85% holding है, which is very very high। Does it make me uncomfortable? Yes, a little bit, because it's like आपने सारे अपने अंडे एक बास्केट में डाल दिए, ठीक है, which is a problem, but it could be very very lucrative as well। यानी उसका मुझे काफी फायदा हो सकता है, because as per my analysis or my research of some sort, मुझे ये लगता है कि PIBTL will be doing pretty good in future। So मैं PIBTL में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ? There are several reasons for it, so I will go through those reasons। क्योंकि since मेरी holding ज़्यादा PIBTL में, so I will not talk much about Engro। आप पूछेंगे क्यों इन्वेस्ट किया भाई? One, dividends, it's a huge company, a conglomerate। Okay, it's not a conglomerate, but it's a huge company in Pakistan. So they will continue doing well in fertilizer sector at least, and we are an agricultural country anyway. So I see it to be a safe bet। You could get into petroleum as well, but एक्चुअली पेट्रोलियम का भी अच्छा स्कोप था इस कोविड के दौरान जब ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, बट एनीवेज आई डिडंट हैव द फंड्स फॉर इट। सो आई विल फोकस मोर कि मेरा PIBTL में ज़्यादा स्टॉक क्यों है। सो टू बिगिन विद, मैं PIBTL में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी व्हेन इट वाज अराउंड 35 रुपीज़। सो आप इसको मेरी मिस्टेक बोलें या जो भी बोलें, देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप
back then जब ये operation start भी इसने किया था. So at that point it was around 35 rupees. So मेरी initial buying काफ़ी high थी. Secondly, it's a project related with CPEC, and CPEC, you know, even मेरे काफ़ी concerns हैं CPEC से related because the repayment is huge. Like there are many काफ़ी negative points भी हैं CPEC के around, but it should benefit. If things go well, it should benefit Pakistan, and this is one of the company which will benefit as well because it deals literally with the import and export. Country में जो चीज़ें आ रही हैं and जा रही हैं, it will help with that. It's the first company Pakistan में which is doing this conveyor belt thing, and it's easing आपको जो coal आ रहा है या जो cement जा रहा है, whatever the case might be, उसके जो shipping में technology use कर रहे हैं ये लोग, वो पाकिस्तान में और कहीं नहीं है. So it's definitely having an advantage technologically speaking. तो वहाँ पे इसको edge है, and then it's operating well. मैंने एक simple सी Excel sheet बनाई है जहाँ पे मैं हर महीने 2 महीने के बाद जो PQA website है Port Qasim Authority, वहाँ पे shipping handling आती है, and I can you guys can check this out. तो वहाँ पे मैं इसके literally check कर रहता हूँ कि PIBTL में कितने total vessels आ चुके हैं historically, and that trend will keep on going up. And as I said, ये script जो है it's literally dealing with PIBTL is literally dealing with the import and export side of a country. So there is great growth perspective there. Third, it belongs to Marine Group. So Marine Group का already PICT है, and it has done great. But again, you would say कि उसके जो total number of shares हैं, that is way less than PIBTL. So that is true. But again, it has a strong backing of a company. जिसके जो पीछे parent group है, it's very strong. So that's another thing. And finally, yes, my whole trading strategy, चाहे forex हो या even stocks हो, it bases around averaging. So मैंने इस शेयर में स्टार्ट किया था अराउंड 33 रुपीज़ एंड आज ये 10 रुपीज़ पे है, एंड थैंक गॉड आई ब्रॉट डाउन माय एवरेज फ्रॉम 33 टू like 17 or something. So let's see whether I'm gonna hold this, या तो उसको मैं काफ़ी अरसे के लिए होल्ड करूँगा या फिर I will take out some positions once I have some kind of profits. Maybe if it reaches around 20-25, people get greedy sometimes. So let's see. Basically आप इस वीडियो को समझें as an update video to the older video कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करता हूँ, and hopefully in the future I will keep updating you regarding my positions, जो मैं नई positions ले रहा हूँ या लूँगा, let's say, and let's see how things go. But for now, I'm just placing heavy bets on PIBTL, and I have very high expectations. I don't want to throw numbers out there, but I hope it can reach like 50 or so in few years. If it reaches 50 in around 5 years, that's pretty good of an investment. So let's see. That's about it. Let me know आपको और कैसा content चाहिए या क्या और आपके questions हैं, and we'll try to target them. Anyways, thank you for watching the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसका जो content है वो पसंद आया, so please do like, share and subscribe. And let me know in the comment section कि आपको किन और topics पे वीडियो बनानी चाहिए, and hopefully we'll continue. Thank you so much. सो जा भाई.